Ladies and gentlemen, good day and welcome to Shakti Pumps India Limited Q3 and 9 months FY23 earnings conference call. As a reminder, all participant lines will be in the listen-only mode, and there will be an opportunity for you to ask questions after the presentation concludes. Should you need assistance during this conference call, please signal an operator by pressing star then 0 on your touchtone phone. Please note that this conference is being recorded. I now hand the conference over to Mr. Rohit Anand from Ernst & Young LLP. Thank you, and over to you, Mr. Anand. Thank you, and good afternoon, everyone. Before we proceed, let me remind you that the discussion may contain forward-looking statements that may involve known or unknown risks, uncertainties, and other factors. It must be viewed in conjunction with our business risks that could cause future result performance or achievements to differ significantly from what is expressed or implied by such forward-looking statements. To take us through the financial results and the key developments and to answer your question today, we have the senior management of Shakti Pumps India Limited, represented by Mr. Dinesh Patidar, Managing Director, and Mr. Ramesh Patidar, Executive Director Export, Mr. Dinesh Patel, Chief Financial Officer, and Mr. Ravi Patidar, CS and Compliance Officer. We will start the call with a brief overview of the past quarter by Mr. Dinesh Patidar, followed by a Q&A session. I will now hand over the call to Mr. Patidar. Over to you, sir. Thank you, Rohit. नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। मैं हमारे क्वार्टर 3 के परफॉर्मेंस से बहुत खुश हूं एवं हमारी टीम ने इन कठोर परिस्थितियों में खूब मेहनत करके 17% वाईवाई में एवं सोलर ईपीसी में करीब 29% वृद्धि की है। ये कठिन परिस्थितियां भी थी और काम करने की स्थिति भी अनुकूल नहीं थी। हमारे एक्सपोर्ट बिजनेस ने भी अच्छा साथ दिया और उनका भी अच्छा प्रदर्शन इस क्वार्टर में रहा है। पीएम कुसुम योजना में भी कुछ पॉजिटिव एफर्ट्स हुए हैं। सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया सिकी ने दिसंबर 2022 में लगभग 6,06,000 पंपों के नए टेंडर जारी किए हैं, जिसके लिए बीड 2023 तक पूरी होने की उम्मीद है और ऑर्डर हमारा क्वार्टर 1 के 24 में हमको मिलने की उम्मीद है। हम इन टेंडर और बीड लगाने वाले और बेहतर योग्यता मापदंड के मिलने की उम्मीद से हम इन टेंडरों की बीड को लगाएंगे और बेहतर मार्जिन की अपेक्षा भी रखेंगे, क्योंकि इन बीड में पुराने एक्सपीरियंस को देखते हुए कुछ सरकार ने भी कुछ इसमें नियम कायदे कठोर किए हैं और टेंडर्स की कंडीशनों को भी इम्प्रूव किया है, और जिसकी वजह से अच्छे प्लेयर्स और ये कुसुम स्कीम सक्सेस हो, ऐसी भारत सरकार की भी कल्पना रही है। और सेकी ने भी टेंडर स्पेसिफिकेशन खूब सारे टाइट करके दिए हैं, जिसमें तकरीबन वही लोग सारे सेक्टर में पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिनके पास अच्छा एक्सपीरियंस है। जैसा कि हमारे पास इस टेंडर की कंडीशन के लिए 40,000 पंपों के एक्सपीरियंस की जरूरत है, जबकि हमारे पास तकरीबन 50,000 पंप का एक्सपीरियंस अवेलेबल है। और जो हमारे अच्छे स्टेट हैं जैसे मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, जहाँ पर हम ऑलरेडी अपने आप को पिछले 3-4 एस्टेब्लिश किए हैं, वहाँ पर तकरीबन ये 6,06,000 में से 5 लाख पंपों की रिक्वायरमेंट सिर्फ इन्हीं स्टेटों की है। तो हमें लगता है कि हम इस आने वाले समय में 2024 के बाद एक अच्छे समय की ओर जाएंगे, क्योंकि उन सब चीज़ों से सीखते हुए सरकार ने भी इम्प्रूवमेंट किया है और हमने भी बहुत एक्सपीरियंस उससे लिया है। हमको ऐसा लगता है कि आने वाले समय में 30 से 35% मार्केट का हम मार्केट शेयर लेने में सफल होंगे और हमारी टीम उस पर खरा उतरेगी, उसके लिए वो कार्य कर रही है। अभी हाल ही में हमको एक ईपीसी अवार्ड भी मिला है, जो हमारे अच्छे एक्सपोर्ट के कारण हमको मिला है, और उसमें मैं हमारे एक्सपोर्ट टीम को धन्यवाद दूंगा। इसके साथ फाइनेंशियल रिजल्ट के लिए मैं आपको हमारे सीएफ को हैंडओवर करता हूँ, दिनेश पटेल। Thank you, sir. In Q3 FY23, our revenue from operations increased by 17%
YOY from rupees 269 crore to rupees 314 crore. In 9 months FY23, our revenue from operation was rupees 785 crore compared to rupees 794 crore in the previous year. Export revenue stood at rupees 166 crore in 9 months FY23, up by 24.5% from rupees 133 crore the previous year. EBITDA for the Q3 FY23 stood at rupees 21.9 crore as compared to rupees 27.3 crore in Q3 FY23. EBITDA for 9 months FY23 stood at rupees 55.7 crore as compared to rupees 74.2 crore in 9 months FY22. EBITDA margin for Q3 FY23 stood at 7% and for 9 months FY23 stood at 7%. The company reported profit after tax of rupees 11.2 crore in Q3 FY23 and rupees 21.9 crore in 9 months FY23. PAT margin stood at 3.6% in Q3 FY23 and 2.8% in 9 months FY23. With this, I now request the moderator to open the floor for question and answer. Thank you very much. We will now begin the question and answer session. Anyone who wishes to ask a question may press star and one on their touchtone telephone. If you wish to remove yourself from the question queue, you may press star and two. Participants are requested to use handsets while asking a question. Ladies and gentlemen, we will wait for a moment while the question queue assembles. Participants, you may press star and one to ask a question. The first question is from the line of Bala Subramanian from Arihant Capital. Please go ahead. Good afternoon, sir. Thank you so much for taking my question. Sir, my first question, SECI has issued new tenders around 6.66 lakh solar farms. So the bidding expected to complete by March 2023. So what kind of opportunities in terms of numbers and how much competitions we may expect who may bid, how many of them are going to bid, how much we can able to grab in these opportunities. Since we have a strong market presence of 30 to 35% in major tendering states, we may able to grab 30 to 40% kind of opportunities in this tender. Could you please throw some more light on that? Yes, very good question. Yes. See, this is 6.6 lakhs tender, and we are very good position in Madhya Pradesh, Maharashtra, Rajasthan, and Haryana. There is a 5 lakhs already sanctioned by MNRE, and our position and our brand image is very good in this area, and we are confident we will get more than 35%, 30% share in the market. So it's very this time is tender specification is very tight, and we think and we are very positive to say ki yes, this time is rate also very good and competition also less. So we are confident we will get the good business. Okay, sir. So on the export side, which countries, which are the countries we are targeting it? What kind of pumps we are experiencing demand over this near term? Yeah, our USA company is doing very well job in USA, and Ramesh can handle this question deeply. Yeah, we are growing in all the sectors in all the continents, especially in Africa and USA for export business. Okay. Yeah. Thank you, sir. Thank you so much. Sir, one more question. Right, we got 2 patents out of 29. So what kind of patents, moved in these patents? Yes, this patent is very good patent and very big patent. So future time we will definitely get good business of these things, because we have started in USA this S4RM motor hour technology, and we have marketed in USA. So recently, yes, it is a development phase,
definitely we will take the good business and profit for USA company for this patent. Okay. So what is our R&D spend and what kind of R&D spend we may expect over medium term? Yes, we basically Shakti Pumps is R&D company and we have very good R&D setup inside. For whole company 150 R&D engineers working. We have done very good job in this power electronic. We have developed the VFD, solar controller, solar inverters, and our motors is very good efficient motors. Worldwide we are very good in good position. So you can compare with any Japanese motors. We are including, we are very good with the same position as Japanese motor or Indian motors, or Shakti motors. Thank you, sir. All the best for future endeavors. Thank you. Next question is from the line of Vishal from Swan Investments. Please go ahead. Thank you for taking my question, sir. This is for Mr. Dinesh Patel. Sir, what was our overall debt level for this quarter, because your interest cost has fallen significantly? Yes. So around 10 crore we have term loan and around 46 crore we have short-term loans. So totality 56 crore we have outstanding as on 31st December 2022. Okay. Great. This is the reason our finance cost is very less. Great. Sir, the second question is to Mr. Patidar, sir. Any status on the price hike you were expecting on the earlier Kusum scheme? Any color on that when the government is expected to give the price rise of 25-30% you were demanding? Yes, definitely. See, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, क्योंकि कुसुम 1 और कुसुम 2 में जो रेट डिफरेंस के लिए जो टेंडर स्पेसिफिकेशन थे, ESL ने उसमें बहुत सारे लूप होल्स छोड़े थे, जिसके कारण कोर्ट में भी मामला पहुंचा था. लेकिन यस, अभी सेकी ने बहुत अच्छे तरीके से प्रोफेशनल वे में उसमें बहुत सारे कट्स लगाए हैं, जिससे कि अच्छे सीरियस प्लेयर ही आ पाएंगे. जैसे कि एक्सपीरियंस, जिसके पास सोलर का एक्सपीरियंस होगा वही लोग रेट कोट कर पाएंगे. और भी उसमें बहुत सारे ऐसे उन्होंने अपने पॉइंट्स लगाए हैं, जिससे कि सीरियस प्लेयर आएंगे और रेट अच्छे मिलने की उम्मीद है, क्योंकि सीरियस प्लेयर्स ही रेट को मेंटेन करते हैं. नहीं तो दूसरे जो जिनको काम नहीं करना होता है या जिनके पास MSME होते हैं, जिनको टेंडर में सिर्फ पार्टिसिपेट करने आना होता है, वैसे इस टेंडर में ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इसमें बहुत ही कठोरता से नियम कायदे लगाए गए हैं. ओके सर, मेरा सवाल था सर, जो स्टार्टिंग में हम लोग रेट हाइक एक्सपेक्ट कर रहे थे गवर्नमेंट से, जो गवर्नमेंट की तरफ से पेंडिंग है, वो कब तक सर हो सकता है आपको कंप्लीशन? उसमें कुछ उसके अंदर आप कुछ बता सकते हैं? यू कैन शेयर सम आइडिया ऑन दैट. नहीं, ये जो नया टेंडर आया है, इसी से आगे की गाड़ी आगे चलेगी, क्योंकि गवर्नमेंट बिजनेस में ऐसा ही होता है. पुराने रेट में कोई करेक्शन नहीं होता है, नए टेंडर्स ही होते हैं और नए टेंडर्स में आगे होता है. जैसा लास्ट टाइम मैंने कॉन्फ्रेंस कॉल में बताया था कि करीब हमने 500 करोड़ के ऑर्डर्स को सिलेंडर करके उनको होल्ड करने के लिए दिया था हरियाणा गवर्नमेंट्स को, जो अभी भी होल्ड है. वो ऑर्डर्स हमारे नए जैसे ही रेट होंगे उसमें हमको कन्वर्ट होके मिलेंगे. ओके सर. ओके. Thank you, sir. Thank you for taking my questions. That's all. Thank you. Thank you. Next question is from the line of Devansh Shah from Niveshaay. Please go ahead. Good afternoon, one and all. My question is, what are the reasons for declining EBITDA margins? Is it only because of rising raw material prices? And also, which are the key raw materials used in production? Yes, definitely only raw material price. First, you can compare my this result. आप उधर देखेंगे कि मेरा जो है रॉ मटेरियल का प्राइस ही इंक्रीज दिख रहा है उसमें. और बेसिकली सोलर के प्राइस बिकॉज ऑफ युद्ध के कारण और चाइना के कारण सोलर के सेल में बहुत प्राइस इंक्रीज हुआ है. दूसरा, स्टील में बहुत प्राइस इंक्रीज हुआ था. कॉपर में यस मेंटेन है और MS में अभी डाउन होना चालू हुआ है. तो रॉ मटेरियल की प्राइस की वजह से मार्जिन पे थोड़ा प्रेशर था, फिर भी हमने बहुत कोशिश की और उसको मेंटेन किया. ओके, थैंक यू सर. थैंक यू शाह सर. थैंक यू.
Thank you. Participants, you may press star and one to ask a question. The next question is from the line of Ankit from JHP Securities. Please go ahead. Hi. Okay. Am I audible? Yes, Yeah. Thank you for taking up my question. So I have one question. So in Q2 of financial year 23, 12,000 solar pumps were kept on hold for execution. So what's the status of that? हाँ, हरियाणा गवर्नमेंट का करीब 500 करोड़ का वो एक ऑर्डर है जो हमने होल्ड किया है, जो अभी होल्ड है, उसमें जैसे ही रेट आगे होंगे तो ऑर्डर अपने आप कन्वर्ट होके हमको मिलेंगे और वो होल्ड ही है अभी. तो जैसे ही ऑर्डर होंगे, नए रेट आएंगे, रेट अच्छे आएंगे, ये डेफिनेटली हम एग्रीमेंट करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे. ओके. हाउ मच टाइम इट विल टेक? यस, ये जो नेक्स्ट ईयर 23 के फर्स्ट क्वार्टर में इसका आप रिजल्ट देखेंगे. Thank you so much. Thank you. Thank you. Next question is from the line of Senthil Kumar from Joindre Capital. Please go ahead. Hi, good afternoon. Thanks for the opportunity. I have two questions. First is, what percentage of exports revenue we derive from USA? USA export percentage? Yeah. It's around 33%. 33% of export revenue, am I right? From USA. Yes. Okay. So what kind of growth now we can expect going forward overall in the export market? Yes, USA में हमारी टीम ने बहुत अच्छा काम किया है. वहाँ हमने बहुत अच्छे काउंटर्स खड़े किए हैं. हम लोग रिटेल में बिजनेस कर रहे हैं. Hello. I'm sorry, sir. I don't know Hindi. Can you speak in English, please? Okay. Yeah, we are growing frequently in US market, and we are strategically expanding our network also in all the US market, all the US states, covering all the US states, 54 states. So we are expanding aggressively in the US market. Okay. So what will be the share of overall exports revenue in the total revenue by FY23? We are trying to maintain our growth in each and every continent. So we will continue grow in the US market as well as other continents also. Okay. So what will be the mix in the overall revenue, sir, for FY24 full year? Approximately 30%. 25 to 30%. 20 to 30%. Okay. And my next question is now this regarding this investments in EV. When can we expect the commercialization of our EV products, sir? So our subsidiary. Because see, EV we are in development phase. We are doing development because we done auto rickshaw and two-wheeler motors, three-wheelers motors. So still is going on testing because it is very good business for us, and we have already started one company, the Shakti Green company, for two-wheeler, three-wheeler, four-wheelers EV motors. And there is we have already purchased land and development is started, and building we can start in around 6 to 8 month time. Plant and machinery is already we have searching, so you can think our 24 after 24 we will start our major sale. Right now we have already started our sale in the around 3 to 4,000 motors we have already sold to, around 5,000 motors we have sold to two-wheeler and three-wheeler market, and still we are testing our motors. Our motors is better than any Chinese motors. So we can expect from FY25 onwards. Am I right, sir? Yes, 24 we can start this new company segment, two-wheeler and three-wheeler. Still we are in developing phase. Okay, sir. So what are the other products apart from EV motors we are planned to manufacture in an EV segment? So only motors and controllers. Okay. For two-wheelers and three-wheelers? Yeah, two-wheeler, three-wheeler, four-wheeler, controller, motors, both. Okay. Thank you. That's it from my side. Thank you. All the best. Thank you. Thank you. Next question is from the line of Jatin Kordia, individual investor. Please go ahead. Hi, thank you for giving this opportunity, sir. I have a few questions. First thing is the solar prices. The polysilicon and the solar panel prices in China have reduced drastically.
So just wanted to understand if the trend is continuing in India as well, because I understand that you are procuring from Indian manufacturers only. Yes, Jitin, very good. This is the Indian policy. We have to use only DMS cells is required, domestic manufacturing cells is required. So we can purchase only few companies in India. We have to purchase domestic sales only. So that is the tender condition, because that is the Atmanirbhar Bharat. Understand, sir. What I was asking specifically was, since globally prices are decreasing for the solar panels, has there been impact on India given the export duty? Are the prices decreasing from previous quarter to the current quarter for your solar panels, which is your major raw material cost? No, not like that. Because see, in solar panel, our Indian government is put 40% they have put it to this duty for Atmanirbhar Bharat purpose, and rest of our raw material is they have already increased the price. So no price decrease in last 2 quarters. Every solar cell manufacturer is in India. They have depend on the Chinese manufacturer, so they have not reduced for Chinese ingots and Chinese raw material for solar panel making companies. Okay, understand. और सर मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि the second question is that ये in US are you selling solar pumps, or as you alluded to one of the previous questions, you are selling the parts to EV? So US we are US हम सेल कर रहे हैं, वाटर पंप भी सेल कर रहे हैं, और कुछ जगह हमने हमारे सोलर पंप्स भी सेल करना स्टार्ट किए हैं, लेकिन मेजर सेल हमारा वाटर का है. सर मेजर सेल किसका है आप बताइए? वाटर सप्लाई पंप्स का है, डोमेस्टिक पंप्स. वाटर सप्लाई पंप्स वो सर आप वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू जनरल मार्केट में बेचते होंगे, और या फिर वो? यस, बिल्कुल करेक्ट. डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू हम प्रमोट करते हैं वहाँ. थैंक यू. मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है सर कि ये जो पुराने टेंडर्स थे जो अभी फिजिबल नहीं है इन सोलर हाई सोलर प्राइस हाई रॉ मटेरियल प्राइसेस, उनको जो मैं बोल रहा हूँ ये जो अपना गवर्नमेंट टेंडर्स थे जो कुसुम पंप से, उनको क्या आपने होल्ड करके जो रखा था सर, उनको आपको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा या आप उनको वॉइड कर सकते हैं, मतलब नहीं एग्जीक्यूट करेंगे क्योंकि वो प्रॉफिट मेकिंग नहीं होंगे? यस, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है. इससे बहुत अच्छी चीज़ें सबको क्लियर हो जाएगी. जो रेट ऑलरेडी एक्सपायर हो चुके थे, इसलिए हमने मिनिस्ट्री को रिक्वेस्ट की थी कि हम ये इस रेट में ये पंप सप्लाई करने की स्थिति में नहीं है. वो मिनिस्ट्री ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, नया टेंडर आ गया और नए बढ़े हुए रेट पे उन्हीं जो 500 करोड़ हरियाणा के जो हमने ऑर्डर होल्ड करा था, वो हमको बढ़े हुए रेट पे हमको ऑर्डर वो मिलेंगे, ऐसी हमारी पूरी उम्मीद है और उसी पे हम लोग काम कर रहे हैं. अच्छा सर, तो ये जो अभी करंट क्वार्टर है, लास्ट क्वार्टर ऑफ ये जो अपना FY23 का, उसमें आप कुसुम के इंस्टॉलेशन चालू रखेंगे या पिछले क्वार्टर के जैसे, या फिर वो अभी भी कुछ भी एग्जीक्यूशन पे नहीं है कुसुम पंप्स इन इंडिया? मतलब मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो फोर्थ क्वार्टर है उसमें आप कुसुम के अंतर्गत आप जो पंप इंस्टॉल कर रहे हैं वो कर रहे हैं, अभी कुछ ऑर्डर्स बचे हैं या फिर वो नहीं है क्योंकि रॉ मटेरियल प्राइस हाई हो चुका है, आप एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हैं? यस, आपका क्वेश्चन मैं सुन पाया हूँ, मैं जो समझ पाया हूँ वो ऐसा है कि जो रेट के कारण हमने जो ऑर्डर रिफ्यूज़ किए थे वो क्वांटिटी तो हमने होल्ड कर दी है, लेकिन कुछ ऑर्डर्स हमारे पास हैं जहाँ पर कुछ रेट महाराष्ट्र में अलग एक टेंडर पे हम काम कर रहे हैं, हम एक अलग टेंडर पे काम कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के जो कुसुम के अंतर्गत नहीं है, उस पर हम लोग ऑलरेडी आगे हमारी सेल रहेगी और वो हम एग्जीक्यूट करेंगे. अच्छा, तो या सर, थैंक यू वेरी मच, दोज वर माय क्वेश्चन. Thank you, brother. Thank you. Next question is from the line of Hardik Vyas from Economics Times. Please go ahead.
Sir, I have two questions. The first one, Hardik, sorry to interrupt you, but you're not audible at all. May I request you to please speak through the handset? I am speaking on the handset. Am I audible now? Sir, no, sir, you're sounding very distant from the phone. Am I audible now? Sir, slightly better. ओके सर, मेरा पहला क्वेश्चन ये था कि यहाँ पे ब्रेकअप ये क्वार्टर का आप दे पाएंगे क्या, कि कुसुम में कितने हो पाए और स्टेट वाइज जो नॉन कुसुम है उसमें कितने हो पाए, और नॉन सोलर पंप्स कितने इंस्टॉल हो पाए? नहीं, वो इस तरह का अलग से मैं नहीं दे पाऊंगा। उसके लिए आपको मैं अलग से हमारी EY टीम को बोलूंगा, वो आपको डिटेल प्रोवाइड करा देगी नंबर वाइज। ओके, मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि इस बिजनेस में हमने जो कुसुम में जो बिजनेस किया है इस क्वार्टर में वो टोटल 223 करोड़ का 223 करोड़ का है। 223 करोड़ का, और बाकी सब है नॉन सोलर? राइट। अच्छा, उसमें एक्सपोर्ट भी आ जाएगा नॉन सोलर में? यस। ओके। सर, दूसरा क्वेश्चन वो था कि जो हम लोग अफ्रीका का जो अपने को ऑर्डर आया है उसमें से $1 मिलियन का वी वर एक्सपेक्टिंग इन द लास्ट क्वार्टर एज वेल कि वो पैसा आएगा तो हम लोग एग्जीक्यूशन करना चालू करेंगे, तो उसका क्या स्टेटस है? रमेश कैन रिप्लाई दिस। हाँ जी, उस क्वार्टर में हमको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से एश्योरेंस लेटर मिल गया है। तो लास्ट ईयर तो उनका लास्ट दिसंबर तो उनका फाइनेंशियल ईयर एंड था, लेकिन उन्होंने इस क्वार्टर का हमको कमिटमेंट लेटर भेजा है। तो इस क्वार्टर में जनवरी एंड में या फरवरी में उम्मीद कर रहे हैं कि पेमेंट आ जाएगा। तो पेमेंट जनवरी एंड या फरवरी में आ जाएगा पैसा? उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे बिजनेस। तो ये क्वार्टर में कुछ होगा या फिर अगले क्वार्टर से ही वापस एक्सपेक्ट करें कि एग्जीक्यूशन अगले क्वार्टर में? पेमेंट आएगा बिल्कुल, हम इस क्वार्टर में रिजल्ट दिखाएंगे उसके। दिखाएंगे, ओके। सर, मेरा अगला क्वेश्चन वो है कि जो अभी नया HCCI का टेंडर आया है 6.6 लाख पंप्स का, और उसका प्राइसिंग बढ़ के आएगा और हम लोग चालू करेंगे एग्जीक्यूट करना, तो उसका प्राइस डिस्कवरी कैसे होगा? अगर कोई ऐसा हो सकता है जैसे पास्ट में हुआ है कि कोई आके बोलेगा कि मैं 1.5 लाख में पूरा सिस्टम इंस्टॉल करूंगा एंड वी विल नॉट बी एबल टू इंस्टॉल दैट एट 1.5 लाख रुपीज, तो हाउ विल बी प्राइस डिस्कवरी कैसे होगा कि फॉर एग्जाम्पल वी आर एक्सपेक्टिंग अ प्राइस हाइक एंड समवन ऐसे ही कोई आके बोलेगा मैं 1.5 पौने 2 लाख में या 2 लाख में या जो भी कम प्राइस में मैं कर पा रहा हूँ एग्जीक्यूट, तो L1 उनको मिल जाए और अपने को? नहीं, देखिए मैं आपको इसमें क्लियर करता हूँ कि ये टेंडर L1 वाला है नहीं, इसमें L1 को कोई क्राइटेरिया नहीं है। ये मार्केट मूव टेंडर है। इसमें जो लोग फार्मर डिसीजन मेकर होगा, जिस कंपनी का उसको पंप चाहिए वो कंपनी का पंप वो परचेस कर लेगा। लेकिन यस, आपने जो बात बोली ना, पिछले टेंडरों में यही चीज़ें हमने सीख के आगे गए हैं। पिछले टेंडरों में MSME को उनके रेट डालने का अधिकार था, इस टेंडर में नहीं है, उनको अधिकार नहीं है। और उनको सबसे पहले अपनी फाइनेंशियल बीट को करने के साथ में 3% बैंक गारंटी उनसे मांगी गई है, जो उनको तुरंत देनी पड़ेगी। अगर वो भाग जाएंगे टेंडर डाल के तो 3% गारंटी उनकी जब्त होगी। और ये टेंडर अलग अलग स्टेट में अलग अलग होंगे, तो अगर एक जगह किसी ने रेट गलत डाल दिया तो वहाँ शायद रीटेंडर होगा। बाकी जो 14 जगह टेंडर वो नहीं डाल पाएगा, क्योंकि उसको उस 14 जगह डालने के लिए एक्सपीरियंस चाहिए। जैसे हम ही ऐसे एक प्लेयर है इंडिया में, जो हम और टाटा, जो सभी जगह सारे स्टेट में हम डाल पाएंगे। बाकी दूसरा हिंदुस्तान में जिसको 40,000 पंप का एक्सपीरियंस होगा वो ही टेंडर डाल पाएगा। जिसको अगर 10,000 पंप का एक्सपीरियंस है तो वो सिर्फ एक ही स्टेट के टेंडर में पार्टिसिपेट कर पाएगा, बाकी जगह नहीं कर पाएगा। ओके। और सर, ये बजट में अपने को प्राइस हाइक मिलने की संभावना है या उसके बाद? क्योंकि अगर हम बोल रहे हैं कि 1 अप्रैल से ये दिखना चालू हो जाएगा कि एग्जीक्यूशन चालू हो गया है, सो आर वी एक्सपेक्टिंग दैट बजट का प्राइस हाइक? बजट का काम ऑलरेडी खत्म हो गया है भाई। बजट तो ऑलरेडी जो है भारत सरकार ने 40 लाख पंप का दे के रखा है सोलर लगाने का। और लास्ट ईयर भी उन्होंने सिलेंडर किया है पैसा, उन्होंने 340 करोड़ रुपया वापस दिया है भारत सरकार को MNRE ने। तो पैसा तो बजट से आ चुका है, कोई इशू नहीं है। ओके। और सर, रॉ मटेरियल प्राइसेस कम हो रहे हैं तो सोलर पैनल प्राइसेस पे भी वो इफेक्ट आ रहा है, और स्टेनलेस स्टील प्राइसेस ऑल्सो? हाँ, स्टेनलेस स्टील की प्राइस कम हो रही है, उस पर आ रहा है असर, लेकिन सोलर पैनल पे कम नहीं हो रही है, उस पर नहीं आ रहा है असर। लेकिन यस, थोड़ा बहुत तो रिस्क फैक्टर सोलर पैनल को है, क्योंकि सोलर पैनल जो सोलर का रॉ मटेरियल है वो एक या 2 कंट्री के पास ही वर्ल्ड में है। और वो लोग अगर डिसाइड कर लें कि हमको प्राइस ऊपर नीचे करनी है तो वो करते हैं।
अच्छा, ओके। Thank you. Mr. Vyas, may I request you to come back in the question queue for a follow-up question? Thank you. The next question is from the line of Ankit from GHP Securities. Please go ahead. Thank you for taking my question. So I just want to know the current order book. यस 100 करोड़ की ऑर्डर बुक है आज की तारीख में हमारे पास. इस क्वार्टर में हमको 100 करोड़ का जो ऑर्डर बुक है वो हमको करना है. Okay, thank you. And the second question is, I think the last quarter it was mentioned that Uganda project will be start executing in December 22. So what's the status of that? अभी रमेश ने बताया ना, वो दिसंबर में उन्होंने उनका ईयर एंड था इसलिए पैसा भेजा नहीं है उन्होंने. अभी उन्होंने हमको लेटर भेजा है कि हम आपको अगले क्वार्टर में भेज रहे हैं पैसा. जैसे ही हमको $1 मिलियन मिलेगा, ऑलरेडी उसमें $6 मिलियन हमारे पास एडवांस आ चुका है. $1 मिलियन और आएगा तो वैसे ही हम उस पर काम स्टार्ट करेंगे. Okay, thank you so much. Thank you. Thank you. Next question is from the line of Forum Makin from Equity Capital. Please go ahead. Hello, sir. Thank you for the opportunity and congratulations on the great set of numbers. Sir, I had a couple of questions. सर, हमने लास्ट क्वार्टर मेंशन किया था कि हम कुसुम स्कीम में नहीं काम करेंगे until and unless प्राइस रिविजन ना मिले. तो ये क्वार्टर व्हाट चेंज द माइंड कि हमने किया वो ऑर्डर जो हमने एग्जीक्यूट करके रखे थे उसमें से कुछ ऑर्डर जो 236 करोड़ का जो हम सेल बता रहे हैं ना, तो 223 करोड़ का उसमें से कुछ ऑर्डर कुसुम के, बाकी नॉन कुसुम के हैं. जो हमने नॉन कुसुम का जो उस क्वार्टर में बताया था वैसे ही सेल अभी भी है. नॉन कुसुम में अभी भी हम करते रहेंगे. जो जहाँ पर हमको मार्जिन मिल रहा है वहाँ हम काम करते रहेंगे. सर, ये क्वार्टर हमने 8000 पंप्स इंस्टॉल किए हैं ना कुसुम में. नंबर मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा. करीब 9600 कुछ पंप्स है. तो ये क्वार्टर भी हम कुछ करेंगे मार्च क्वार्टर में. हाँ, 100 करोड़ का हमारे पास ऑलरेडी ऑर्डर बुक है. पर उस पे प्राइस रिविजन तो नहीं है ना हमारे पास, तो भी हम करेंगे. यहाँ पर रिविजन है वही काम करेंगे. जैसे छत्तीसगढ़ है, महाराष्ट्र है, जहाँ पे थोड़ा मार्जिन हमको मिलता है वही काम करेंगे हम. बाकी तो सिलेंडर कर दिया ऑर्डर्स हमने, वहाँ होल्ड पे रख दिए ना. राजस्थान के, हरियाणा के, पंजाब के होल्ड पे है ऑर्डर्स. अच्छा, और सर हमने ही होल्ड पे रखे हैं या बाकी प्लेयर्स लाइक टाटा उन्होंने भी होल्ड पे रखा है. हाँ, उन्होंने भी होल्ड पे रखे. तो सर वो फार्मर का तो पैसा आ गया होगा राइट, तो उसका क्या होगा. एफडी करके रखा है डिपार्टमेंट ने. बट सर ऐसे चलता है, मतलब ब्लैक लिस्ट वगैरह होने का कोई चांस नहीं, क्योंकि ऑर्डर ये जो रेट थे ना, ये रेट ऑलरेडी एक्सपायर हो चुके थे. जो 2 साल पहले 2.5 साल पहले रेट बुलाए थे वो एक्सपायर हो चुके थे, इसलिए वो उसमें कोई नहीं कर सकते थे. हाँ, अभी जो नए रेट आएंगे सेकी के और उसमें कोई सप्लाई नहीं करेगा तो वो ब्लैक लिस्टेड भी होगा और उसका अर्नेस्ट मनी भी जब्त होगा. राइट सर. और सर ये जो थर्ड टेंडर है उसमें हम बोल रहे हैं कि मार्च में प्रोसेस खत्म होगा और उसके बाद L1 का प्राइस अराउंड 1 वीक में मैच करना है. तो सर उसके बाद का प्रोसेस क्या होगा, लाइक वापस डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ेगा स्टेट के साथ, या क्या प्रोसेस एक्सप्लेन कर सकते हो उसके बाद क्या होगा और इम्प्लीमेंटेशन कब तक स्टार्ट होगा. जैसे ही सेकी रेट कॉन्ट्रैक्ट रिलीज करेगा तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है. जैसे रेट कॉन्ट्रैक्ट वो रिलीज करेगा वैसे ही एक दिन में हमारी सारी जगह सारी टीम अवेलेबल है. 1 वीक के अंदर सारा स्टेट गवर्नमेंट के साथ एग्रीमेंट होकर काम स्टार्ट हो जाएगा. एवरीबडी इज वेटिंग ना, क्योंकि हर आदमी के पास पैसा फार्मर ने जमा करके रखा हुआ है. फार्मर की तरफ से उनको प्रेशर है. वो फार्मर तो एग्री कर रहा है कि मैं बड़ी कास्ट पे ले लूँगा, आप तो मुझे दीजिए. तो सब लोग इंतजार कर रहे हैं कि रेट जैसे ही फाइनल होगा एग्रीमेंट करके काम स्टार्ट करेंगे. बट सर फार्मर ने पुराने रेट पे पैसा दिया होगा राइट, तो अभी प्राइस बढ़ेगा तो एक्स्ट्रा पैसा फार्मर को भी देना पड़ेगा ना. यस, वो देने के लिए तैयार है. जैसे आप देखिए कि अगर जहाँ पर 25% हरियाणा में 25% शेयर फार्मर का है, सपोज कीजिए 100 रुपये अगर रेट बढ़ते हैं तो उसमें से उसको 25 रुपये उसको भी देना पड़ेंगे. 75 रुपये दोनों गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट बियर करेगी और बियर करने के लिए तैयार है. तो सर वो पैसा कलेक्ट करने के लिए वो सब टाइम जाएगा ना सर. नहीं, इसमें कोई टाइम नहीं जाएगा, क्योंकि सब आप ये देखेंगे. मेरी एक शक्ति पंप्स की यूट्यूब पे एक वीडियो है जिसमें हरियाणा में सुबह से लोग लाइन लग के, सुबह 6 साढ़े 6 बजे बैंक खुली नहीं है, बैंक 10 बजे खुलेगी तब से लाइन में लग के पैसा देने के लिए तैयार है.
तो जैसे ही ये मैसेज जाएगा कि एक्स्ट्रा पैसा दीजिए, वो हमारी टीम भी उनसे कनेक्ट कर लेगी और दूसरी भी उनको सीधे डिपार्टमेंट को पैसा देना है। जो उनका फार्मर शेयर बढ़ा हुआ जो फार्मर शेयर है वो उनको फार्मर्स को डिपॉजिट करना है। ओके सर। और सर वो डॉक्यूमेंट में लिखा है कि ये प्राइस 2 इयर्स तक वैलिड होगा। यस डेफिनेटली। तो हमने अभी मेंशन किया कि ये पूरा ऑर्डर 2023 तक इम्प्लीमेंट हो जाएगा, तो नहीं, हमने कहाँ मेंशन किया कि पूरा ऑर्डर इम्प्लीमेंट हो जाएगा। हम तो कह रहे हैं 30% हम मार्केट शेयर ले पाएंगे। ओके सर। और सर हमारे पास अभी प्राइस जब बढ़े थे तो आई थिंक हमने इन्वेंट्री थोड़ा ज़्यादा स्टॉक करके रखा था, तो वो हमारा हाई इन्वेंट्री जो रहेगा पंप्स का वो निकल गया है या अभी भी वो कॉस्ट पे हमारे पास पड़ा है? नहीं, वो डाउन हो गया है, ऑलरेडी डाउन हो चुका है। आपने देखा इस क्वार्टर का जो मार्जिन आप देखोगे, कैलकुलेट करोगे, तो रॉ मटेरियल के प्राइस बढ़ने के बावजूद भी हमारा मार्जिन उसमें मेंटेन है। तो उसके पीछे रीजन वही है कि जो हमारा हाई स्टॉक था वो हमारे पास, उसने हमको सपोर्ट किया। क्योंकि सर अभी सोलर पैनल, स्टील सबका प्राइस कम हो गया है, तो उसका बेनिफिट हमको इवन दो प्राइस रिविजन नहीं है। शायद कॉल में शायद मुझे ऐसा लग रहा है कंफ्यूजन है। सोलर पैनल में कोई प्राइस कम नहीं हुआ है। लास्ट क्वार्टर से इस क्वार्टर में सेम पोजीशन है सोलर पैनल की, कोई प्राइस कम नहीं हुआ है। ओके। और सर नॉन कुसुम में क्या आप बता सकते हैं, हमने लास्ट क्वार्टर बताया कि महाराष्ट्र में नया टेंडर 1 लाख पंप्स का एक्सपेक्टेड था जनवरी तक, तो वो गवर्नमेंट ऑर्डर निकल चुका है, उसका गवर्नमेंट ऑर्डर निकल चुका है और हम 10-15 दिन में उम्मीद कर रहे हैं कि वो टेंडर भी आ जाएगा। वो गवर्नमेंट ऑर्डर निकला नहीं था इसलिए वो इंतजार कर रहे थे। गवर्नमेंट ऑर्डर निकल चुका है, परसों आ गया है वो, तो अब वो टेंडर भी वो थ्रू करेंगे वो। तो ये मार्च ये क्वार्टर में हम करेंगे? नहीं, ये क्वार्टर में नहीं हो पाएगा। उसको भी जो अपने यहाँ टेंडर सिस्टम है जो अपने आप में बहुत ही टाइम और सिस्टमेटिक है, तो उसके लिए एक कोई भी टेंडर आए तो उसके लिए 90 से 100 दिन तो लगते ही है। ओके। और सर महाराष्ट्र में बोला है कि requested to come back in the question queue. Sure, thank you. Next question is from the line of Mahesh Bendre from LIC Mutual Fund. Please go ahead. Hi sir, thank you for the opportunity. Sir, आपके जो पंप्स में जो मोटर लगते हैं, आई थिंक आपके 2 प्लान्स है। सो जो पंप लगते हैं सब आप खुद इंटरनली बनाते हैं या कहीं बाहर से प्रोक्योर करते हैं? नहीं, पंप के सारे स्पेयर पार्ट्स भी हम खुद बनाते हैं महेश। और मैं आपको बोलूँगा कि आप आइए, एक बार पीथमपुर आइए, देखिए सारे पंप के सारे स्पेयर पार्ट्स, पंप के सारे कंपोनेंट्स, मोटर के सारे कंपोनेंट्स। इवन आपको देख के बड़ा अच्छा लगेगा कि एक पंप कंपनी में पावर इलेक्ट्रॉनिक का यूनिट, जापान का फुल्ली ऑटोमेटिक यूनिट जो VFD बनाता है, सोलर कंट्रोलर बनाता है, हमने टेक्नोलॉजी पर बहुत काम किया है। और हम बेसिकली शक्ति पंप्स टेक्नोलॉजी कंपनी है और हमने इतने अच्छा मोटर्स, दुनिया का सबसे बेस्ट मोटर बनाया है, दुनिया का बेस्ट पंप बनाया है। और VFD भी यस, हम उसको भी मोरलेस दुनिया के बराबर ला पाए हैं और उसमें भी R&D हमारी चालू है। तो आप कभी आइए, मोस्ट वेलकम। बॉम्बे से बहुत सारी फ्लाइट्स इंदौर के लिए अवेलेबल है। आप जब भी आने का मन करे आपका, EY को बताइए, हम बाकी सब अरेंज करेंगे। Sure. Thank you. I mean, sir, thank you for the this one. But sir, मतलब whatever the things required for casting or spare parts or motors, everything will make in-house? Yes. See, this is our casting pump. See, हम लोग बाकी हमारे इंडियन मैन्युफैक्चरर दोस्तों से अलग है। हमारे पंप में कास्टिंग नहीं इस्तेमाल होती है। हमारे पंप में स्टेनलेस स्टील की फैब्रिकेटेड टेक्नोलॉजी है, जो हम शीट बाहर से खरीद के लाते हैं, फिर उनको शेप देके अपने हम उसके कंपोनेंट्स बनाते हैं, उनके पार्ट्स बनाते हैं। और हमारे पंप में कोई भी CI कास्टिंग का कोई कंपोनेंट नहीं होता है। यस, इन्वेस्टमेंट कास्टिंग के 2 कंपोनेंट होते हैं जो हमारा वेंडर राजकोट में वो बनाता है। Okay. Sure. Thank you so much, sir. Thank you, Ash. Thank you very much. Thank you. Next question is from the line of Dipesh Sancheti from Manya Financial Service. Please go ahead. Hello. Yes. Am I audible? Yes. अच्छा सर, पहले तो मेरे को पूछना था कि कितना कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है इस क्वार्टर में हमारा?
Around 30%. 30%. Yes, 30%. अच्छा, और सिंस अपना ऑर्डर बुक 100 करोड़ ही है, इस क्वार्टर में या नेक्स्ट क्वार्टर में कितना ऑर्डर बुक हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो टेंडर्स नहीं, दो देखिए, टेंडर तो अगले क्वार्टर में ही आएंगे, इस क्वार्टर में नहीं आ सकते। अच्छा, तो इस क्वार्टर में फिर ऑर्डर कहाँ से जनरली तो देखिए 100 करोड़ का हमारा ऑर्डर बुक है, हमारे ईपीसी का और इंडियन मार्केट का। बाकी एक्सपोर्ट का जो हम लोग करते हैं वो करेंगे ही, और बाकी और कोशिश जारी है सब तरफ से करने की। ओके, तो इस क्वार्टर में कितना एक्सपोर्ट्स किया था हमने लास्ट क्वार्टर में एक्सपोर्ट किया है करीब 65 करोड़, 65 करोड़। 65 करोड़। ओके, एंड ये जो हरियाणा का जो ऑर्डर है जो एग्जीक्यूट होने वाला है, मतलब जो आई थिंक रीप्राइस होने वाला है, वो मतलब अगर वो ऑर्डर आ जाता है हमें, तो कितने टाइम तक ये एग्जीक्यूशन होगा? वो तो यस, जो टेंडर कंडीशन है कि हमको 45 डेज में इंस्टॉलेशन करना है और 60 डेज में उसको कंप्लीट करके आपको डिपार्टमेंट को सबमिट करना है, उतने समय में हमको करना पड़ेगा। सो सर, गोइंग फॉरवर्ड, जैसे मैं समझता पूरे कॉन्कॉल से, जैसे जैसे ऑर्डर्स इंक्रीज होंगे, ये टेंडर्स दूसरे स्टेट से आएंगे, तो अपना ऑर्डर बुक बढ़ेगा और अपना कैपेसिटी यूटिलाइजेशन हायर होगा। इज दिस द राइट असेसमेंट और यू वांट टू ऐड समथिंग? नहीं, राइट असेसमेंट, परफेक्टली राइट। Perfectly. So, just one last question. In FY25, how much sales do we expect from EV motors and EV controllers? Around 200 crores. Around 200 crores. Yes. And margins should be similar to our pumps or should be better? We will see how go in EV market in Indian market scenario. As in, since it will be OEM, तो एवरेज मार्जिन्स कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम? अब वो उस समय देखेंगे। ईवी के मार्जिन में जो लोग कंपटीशन में जो लोग हैं, हम जिनको मोटर बना के दे रहे हैं, वहाँ से हमको अगर 12% ईबिटा 15% ईबिटा मिलता है तो वी आर हैप्पी। ओके, एंड किसी ओईएम से ऑलरेडी हमारी बात शुरू है, मतलब हैव वी गिवन देम सैंपल्स, कहीं से अप्रूवल हो चुके हैं? मतलब are we doing this on backing of some bigger orders? डेफिनेटली जब R&D करती है कोई कंपनी तो उसके पास R&D में बैकअप तो होता ही है, और वो डू नॉट डिस्क्लोज वाले एग्रीमेंट के तहत हम लोग हैं, तो वो कंपनियों का नाम हम नहीं ले पाएंगे जिनके लिए हम मोटर्स बना रहे हैं। नहीं, दैट इज परफेक्ट, दैट इज परफेक्ट। थैंक यू सो मच सर, एंड रियली हैप्पी टू लिसन टू द एंटायर कॉल इन हिंदी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। Next follow-up question is from the line of Balasubramaniam from Arihant Capital. Please go ahead. Hello. Yes. Thank you so much for taking question. Sir, I want to understand about the working capital cycle in this quarter. What is the inventory levels? What kind of improvement we may expect in over medium term in the working capital cycle? What kind of strategies we are implementing on that? तो एक्चुअली हम लोगों का इन्वेंट्री जो है 224 करोड़ का है, जो अराउंड 51 डेज को 224 crores का inventory is already in our books and it is sufficient for 51 days. Yes, sir. And creditors is of around 222 crore, that is for 101 days. Debtors for 331 crore, that is for 76 days. Total working capital requirement is of around 90 to 100 days. 90 to 100 days. Okay, sir. So what kind of improvement we may expect, sir? We are expecting when we will get some good order, it will reduce drastically. Okay, sir. Okay, thank you. We will not get any fund from bank and we will manage it internally. Okay, sir. Okay. Thank you, sir. Thank you very much. I now hand the conference over to Mr. Dinesh Patidar for closing comments.
ओके, यस। आज आप सभी लोग आए इस कॉल में, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमें पीएम कुसुम में काफ़ी दिलचस्पी देखी है और नए ट्रेडर्स के बारे में बातचीत की है। आपके और भी कोई क्वेश्चनों का मैं जवाब अगर सही से नहीं दे पाया हूँ तो आप हमारी EY टीम से जुड़ें और उनको दें। मैं कोशिश करूँगा आपके सारे क्वेश्चंस का जवाब आपको दे पाऊँ और लॉन्ग टर्म के लिए हम आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ के आगे के लिए काम करें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, आप लोग आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you very much. On behalf of Shakti Pumps India Limited, that concludes this conference. Thank you for joining us. You may now disconnect your lines. Thank you.